So yes, dear students, welcome to another accounting standard AS5. बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड है and of course many things are self-explanatory. Then also as part of revision we need to complete of this chapter accounting standard 5. Now my dear students, ये स्टैंडर्ड का सबसे मेन फोकस क्या था and that was nothing but disclosure in profit or loss. Of course that does not mean the name of the standard is disclosure in P&L. What was the name of the standard? क्या था नाम इसका? Net profit or loss for a period, prior period item and changes in accounting policies. This was the name of the standard. Now my friends, क्या क्या चीज था इस स्टैंडर्ड में, एक एक चीज को अपन डिस्कस कर लेते हैं एंड इट्स अ वेरी स्मॉल, इट हार्डली टेक हाफ एन आवर टू कंप्लीट ऑफ द स्टैंडर्ड. लाइक in my profit and loss account I have to disclose what I have to disclose. I have to disclose on the face of the P&L the items of incomes as grouped between ordinary activities and extraordinary activities. अभी ordinary activities क्या होता है रे बाबा? What is ordinary activities? Nothing but those activities which are carried out in ordinary course of business related to my main activity, incidental to my main activity or extension of my main activity. उसको हम बोलते हैं तो ordinary activities जो हमारा business को relate करता है. हाँ, but within ordinary activity ऐसा कुछ हो सकता है that looking at the size, incidence or nature of the item, it would be more appropriate to disclose it separately. जैसे कि मैंने VRS कॉम्पनसेशन पे किया, सो इंसिडेंस सर हर रोज पे करते हैं, एवरी ईयर यू पे? नो सर, वंस इन अ ब्लू मून ऐसा VRS का स्कीम आएगा एंड वी विल पे VRS कॉम्पनसेशन. दिस इज नथिंग बट ऑर्डिनरी ओनली, बट विद इन ऑर्डिनरी आई वुड लाइक टू शो इट सेपरेटली. देन स्टैंडर्ड सेज प्लीज शो इट सेपरेटली. या so looking at the size, incidence or nature of the item, separate disclosure would enhance the utility of financial statement and obviously usko alag se dikhane ka on the face of P&L. Then friends, we had something known as extraordinary activity. Kya tha re baba? What was extraordinary activity? Sir, extraordinary activities relates to items of incomes and expenses which are clearly distinct from my main activity. And of course, they are expected to occur infrequently. Loss by fire, government grant getting refunded, attachment of my property, ये सब extraordinary activities है. इसका business के साथ कोई direct या indirect लेना देना नहीं है. तो anything which arises from extraordinary activities उसको भी profit and loss statement में अलग से दिखाने का, disclose करना. Basically focus ये है disclose करना भाई कि how much is the effect of ordinary activities, how much is the effect of extraordinary activities. Friends, इसके बाद तुम लोग ने पढ़ा था something known as prior period items. What are prior period items? Sir, prior period items are items of incomes and expense which arise in the current year on account of errors or omissions in preparation of financial statements in one of the previous year. हमसे error हुआ है, हमसे omission हो गया है, कब हुआ? Exactly, एकदम preceding, immediately preceding नहीं सर, कोई भी पिछला साल में. समझो मेरा current year is 2020-2021. This is my current financial year. Error has been made in past 1920, 18, 19, 16, 17. उसमें error हुआ है. Errors identify कब हुआ? 2021 में, और उधर rectification होता है. So when I rectify the error, the effect on P&L will be there because this error is affecting my P&L. तो what does this standard say? Standard बोलता है कि भाई ये जो rectification किया है ना, उसको अलग से दिखाओ. या separate disclosure is required of prior period item. हाँ, retrospective changes are not prior period item. In 2020-21 में बोलता है तुम्हारा पगार बढ़ रहा है from 2016-17. Means I am increasing the salary in the year 2021, but the effect of increase will be from 16-17.
तो ये क्या प्रायर पीरियड आइटम है? ऑब्वियसली नो माय डियर, दिस इज नॉट प्रायर पीरियड आइटम. व्हाई? बिकॉज दिट डिड नॉट अराइज ऑन अकाउंट ऑफ एरर. एरर के कारण ये अराइज नहीं हुआ है. दिस इज रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट. I have changed something or I have applied something right from the beginning. Retrospective amendment. Hence, this is not a prior period item. Yeah. So, retrospective changes are not prior period item. उसके बाद friends, we had something known as changes in accounting policy. This is dealt in AS5. When can I change my accounting policy? मैं अपना accounting policy कब change कर सकता है? ये बात AS5 डील करता है. हाँ, लेकिन अगर तुम पॉलिसी चेंज करता है, then you have to disclose as per AS1. कि what is the financial effect of the change? That is as per AS1. But when can you change? Do you remember 3 condition when there is a change in law to comply with the requirement of accounting standard, or the change will lead to better preparation and presentation of financial statements, then I can change the accounting policies. हाँ, but याद रखना, following is not considered as change in accounting policy. An adoption of a new policy for events or transactions which differ from the substance of the transactions and events which were happening in the past. The substance of the transaction is differing और उसके लिए मुझे नया पॉलिसी अडॉप्ट करना पड़ता है. तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानते हैं. वैसे ही अडॉप्शन ऑफ अ न्यू पॉलिसी फॉर इवेंट और अ ट्रांजैक्शन विच डिड नॉट अकर इन पास्ट. पास्ट में ऐसा कोई पॉलिसी नहीं था, मैं किसी को पेंशन ही नहीं देता था, इस साल से चालू किया पेंशन देना, तो उसके लिए अकाउंटिंग पॉलिसी बनाया. तो क्या बोलने का, सर क्या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? आंसर है नो सर, दिस इज नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलते हैं. तो अगर कोई भी नया पॉलिसी हम अडॉप्ट करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ अ ट्रांजैक्शन or an event which differs from substance what was there in the past, or a transaction or event which didn't happen in past but it is happening now onwards, उसके लिए कभी भी नया पॉलिसी हम अडॉप्ट करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स उसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलने का नहीं. आफ्टर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी माय डियर, you had something referred as accounting estimates. छोटा सा स्टैंडर्ड खत्म भी हो गया. देखो, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स नथिंग बट अप्रोक्सीमेशन है. सर किसका अप्रोक्सीमेशन है? किसी अमाउंट का. बिकॉज वी डोंट हैव प्रॉपर मीन्स ऑफ मेजरमेंट. दिस इज स्क्रैप वैल्यू ऑफ असेट, यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. आई डोंट हैव प्रॉपर मीन्स ऑफ मेजरमेंट. एंड फ्रेंड्स, व्हेन वी डोंट हैव प्रॉपर मीन्स ऑफ मेजरमेंट, डोंट यू थिंक वी हैव टू एस्टिमेट? तो एस्टिमेट करना पड़ता है. और याद रखना, एस्टिमेट और एक्चुअल कभी सेम हो ही नहीं सकता है. इट हैज टू डिफर यार. एस्टिमेट कोइंसिडेंटली हो गया तो हो गया, झगड़ा नहीं करना. कोइंसिडेंटली दैट इज पॉसिबल, बट व्हेन यू एस्टिमेट योर एक्चुअल्स विल ऑब्वियसली डिफर. द डिफरेंस बिटवीन एन एस्टिमेट एंड एक्चुअल अमाउंट इज नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम. डोंट से वी मेड एन एरर. नो, इट इज नॉट एन एरर माय डियर. और ये एस्टिमेट का रिवीजन होना चाहिए. ये अकाउंटिंग एस्टिमेट को रिवाइज करना पड़ता है when they require revision, sir, because of new information, because of better experience, subsequent development. These are the 3 reasons for which I will change or I will revise the accounting estimate. And remember my dear students, a change in accounting estimate is neither a prior period item nor extraordinary item. ये prior period और extraordinary item नहीं है रे भाई, change in estimate है. Clear? So this is what we are having in this part, AS5 का theory. Yeah, if you look properly, ये हमारा टेक्स्ट बुक है जेकेसी का, जिसमें हम लोग ने यही सब बात लिखा हुआ है. ऑफ कोर्स थोड़ा डिटेलिंग में बात किया है उधर. नेट प्रॉफिट कैसे ढूंढने का, फ्रॉम ऑर्डिनरी, फ्रॉम एक्स्ट्राऑर्डिनरी. हाँ, बट ऑर्डिनरी के अंदर भी ऐसा कोई आइटम है जिसको हमको अलग से दिखाना चाहिए, बिकॉज उसका साइज, नेचर और इंसिडेंस थोड़ा डिफर करता है. देन वी हैड एक्स्ट्राऑर्डिनरी.
उसका एग्जाम्पल्स, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और व्हेन कैन यू चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी? 3 रीजन, लॉ चेंज हो गया, एएस, या तो मैनेजमेंट को लगता है कि बेटर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन हो सकता है। अडॉप्शन ऑफ अ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी, not changes. Prior period item, errors and omission in preparation of financial statements of one or more prior periods. ठीक है। Okay friends, now I hope you remember, जिससे हमने स्टार्टिंग में भी बात किया था जब एएस रिवीजन लेक्चर्स चालू किए थे, कि we will not be discussing classwork question unless and until it is very very important. The reason classwork questions are already discussed in class and the videos of those class discussion are available to you. So revision has to be something value addition to you. Hence, what I have planned is, why not discuss some homework section and some past paper क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं. सो विल जस्ट बी वैल्यू एडेड, बिकॉज क्लास वर्क तो हमने ऑलरेडी क्लास में सब कर डाला था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक. तो होमवर्क सेक्शन में भी सब करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज मेनी थिंग्स आर रिपीटेटिव. सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आई फील शुड बी डिस्कस्ड बिफोर वी गो फॉर आवर एग्जाम्स. चलो, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम होमवर्क सेक्शन. Explain whether the following will constitute a change in accounting policy or not as per AS 5. Introduction of a formal retirement gratuity scheme by an employer in place of ad hoc ex gratia payments to employee on retirement. Management decided to pay pension to the employees who have retired after completing 5 years of service in the organization. Such employees will have pension of rupees 20,000 per month. Earlier, there was no such scheme of pension in the organization. Yes, friends. Is this change in accounting policy? What do you think so? Obviously, answer is no. दोनों में no. Why no, sir? पहला तो क्या है, देखो ये वर्डिंग्स पहला पढ़ो उसका. एड हॉक ग्रेशिया एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स मतलब क्या? अरे पर्सन कोई रिटायर होता है ना, तो मैं उसको पैसा देता है, ग्रेट्यूटी लो, कि भाई तू रिटायर हो रहा है, इतना साल सेवा किया हमारा, लो पैसा. कितना? एड हॉक, लमसम, कुछ भी दे देते, कोई थिंकिंग नहीं है. बट फ्रॉम दैट नाउ वी आर गोइंग फॉर अ फॉर्मल प्लान, फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेजुटी स्कीम. इसका मतलब क्या हुआ? सर समथिंग विल बी फॉर्मलाइज. अगर 4 साल खत्म हुआ है, नो ग्रेजुटी. 5 साल हुआ इतना, 6 इयर्स इतना, 7 इयर्स इतना, समथिंग लाइक दैट. दैट इज फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेजुटी स्कीम. तो कैन आई से दिस, यू हैव टू अडॉप्ट अ न्यू पॉलिसी बिकॉज नाउ यू विल बी रिकॉग्नाइजिंग द ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन व्हाट? फॉर्मल प्लान. डोंट यू थिंक द सब्सटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज देयर अर्लियर? हेंस आई एम अडॉप्टिंग अ न्यू पॉलिसी. दिस इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. दूसरा, हमने पेंशन देना डिसाइड किया है, सबको 20,000 रुपया पेंशन मिलेगा जिन्होंने 5 साल खत्म किया है. Can I say adoption of a new policy for a transaction or event which did not occur in past is not a change in accounting policy? इसलिए मैंने बोला कि ये दोनों change in accounting policy नहीं है. As per AS 5, net profit or loss for a period, prior period items and changes in accounting policy. The adoption of an accounting policy for events or transactions that differ in substance from previously occurring events or transactions will not be considered as change in accounting policy. Accordingly, introduction of a formal retirement gratuity scheme by an employer in place of an ad hoc ex gratia payments to employees on retirement is not a change in accounting policy. Similarly, adoption of a new accounting policy for events or transactions which did not occur previously or there were immaterial will not be treated as change in accounting policy. Let me come to past papers. उसमें question number 2 करते हैं. Of course, question number 2 gets related to our AS1, but it is also to be read along with AS5. Let us read this question. HIL Limited was making provision for non-moving stocks based on number of issues having occurred for the last 12 months up to 31st March 17.
The company now wants to make the provision based on technical evaluation during the year ending on 31st March 18. Total value of stock is 120 lakhs. Provision required based on technical evaluation is 3 lakhs. Provision required based on 12-month number of issues is 4 lakh. You are requested to discuss the following points in the light of accounting standard 1. Does this amount to change in accounting policy? No, sir, this is not change in accounting policy. Can a company change the method of accounting? Why not? Now, first of all, friends, you have already done this in AS1, but see how AS5 is coming into picture here. If you look properly, you are having some non-moving stocks, means those stocks which cannot be sold so easily. So obviously at some point of time they will become redundant and it will be lost. So I am creating provision. उसके लिए अपन लोग provision create करता है कि भाई ये goods बिकेगा नहीं, तो इसका अभी से loss book कर रहे हैं धीरे धीरे करके. अब वो loss book कर रहे हैं हम लोग, ये हमारा policy है. ये loss कैसे ढूंढते थे? तो earlier we used to find out this loss based on 12-month issue. 12 महीने में कितना goods issue हुआ है उसके हिसाब से. That is 12-month issue. प्रोविजन रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन 12-month इश्यू था 4 लाख. लेकिन अब हमारा थिंकिंग क्या है? वी विल गो फॉर प्रोविजन विच विल बी बेस्ड ऑन टेक्निकल इवैल्यूएशन. डोंट यू थिंक फ्रेंड्स वी आर चेंजिंग द वे ऑफ फाइंडिंग आउट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन? मुझे प्रोविजन करना चाहिए, ये मैंने चेंज नहीं किया है. आई एम नॉट चेंजिंग द स्टफ दैट आई शुड हैव प्रोविजन. व्हाट आई एम चेंजिंग इज ये प्रोविजन का अमाउंट कैसा ढूंढने का. क्लियर? So this is not a change in accounting policy, this is a change in accounting estimate. You can just read it. Of course, इसमें AS1 कैसे आता है? तो वहां पे AS1 में ये क्वेश्चन है कि क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? तो आंसर इज नो. इसलिए AS1 के हिसाब से डिस्क्लोजर नहीं करने का है. AS5 में इसको मैं बोलेगा इट इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट. एंड ऑफ कोर्स अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मे बी डिस्क्लोज, नॉट शुड बी डिस्क्लोज. दैट्स व्हाई इफ यू रीड हियर द डिस्क्लोजर कैन बी मेड फॉर सच चेंज. You can make a change. The decision of making provision for non-moving inventories on the basis of technical evaluation does not amount to change in accounting policy. Accounting policy may require that provision for non-moving inventory should be made, but the basis for making provision will not constitute an accounting policy. किस बेस पे हम लोग ये provision बनाते हैं? 12 महीना का बेस पे बनाता है या टेक्निकल के बेस पे बनाता है? ये तो हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है ना. The method of estimating the amount of provision may be changed in case of more prudent estimates can be made. ठीक है. Now ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये हमने ऑलरेडी क्लास वर्क में कर दिया. रेट्रोस्पेक्टिवली पगार बढ़ाते हैं तो वो प्रायर पीरियड आइटम नहीं है. Hence I am not discussing it again because stuff is repetitive. I'll come to question number 5. The accountant of Mobile Limited has sought your opinion with relevant reasons whether the following transactions will be treated as change in accounting policy or not for the year ending on 31st March 17. Please advise him in the following situation in accordance with provisions of relevant accounting standard. चलो advise करते हैं Mobile Limited को, क्या ये change in accounting policy है कि नहीं. Provision for doubtful debt was created at 2% till 31st March 16. From financial year 16-17, the rate of provision has been changed to 3%. Is this change in accounting policy? Obviously, no. Nothing but estimates, sir. पहला मैं 2% करता था, अभी 3% करता है. Based on new information, better experience, or subsequent development, I am changing it. During the year ended on 31st March 17, the management has introduced a formal gratuity scheme in place of ad hoc ex gratia payments to the employees on retirement. Obviously, no. ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा था, वही चीज वापस आया. Till the previous year, the furniture was depreciated on straight line basis over a period of 5 years. From current year, the useful life of furniture has been changed to 3 years. Change in useful life, sir, again change in an accounting estimate. Management decided
to pay pension to employees who have retired after completing 5 years of service in the organization. Such employees will get pension of 20,000 per month. Earlier there was no such scheme of pension. Again, this is not a change in accounting policy. See, एक फोर्थ पॉइंट और सेकंड पॉइंट इफ यू लुक प्रॉपर्ली ऐसा ही क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया होमवर्क सेक्शन का. During the year ended on 31st March 17, there was a change in the cost formulae in measuring the cost of inventory. Answer is yes. मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज करता था, उसमें से मैं वेटेड एवरेज पे चला गया, तो कॉस्ट फॉर्मूले चेंज किया है कि कौन सा कॉस्ट हमारा सीओजीएस में जाएगा, वो फॉर्मूला चेंज किया है हमने, इधर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज, बिकॉज AS2 तो वही अलाउ करता है. तो दिस इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. Yeah, my dear students, you can just read it these points 1 2 3 4 5. कुछ खास नहीं इसमें. This much for AS5, this chapter. Of course, you can't omit the chapter. हर एक accounting standard important है, but I can say one glance is fair enough. So my dear students, let me end up AS5 now and go further for another accounting standard. Thank you very much.